हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पीसा सिटी ऑफ इटली। 2 से 3 घंटे बाद मुझे यहाँ से निकलना है रोम के लिए। तो अभी तकरीबन 2 से 3 घंटे हैं हमारे पास। इन 2 से 3 घंटे के अंदर सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि पीसा की स्ट्रीट्स का वॉक करते हैं, थोड़ी सिटी को देखते हैं यहाँ की स्ट्रीट्स कैसी हैं, और अगर आसपास कोई अच्छी फेमस जगह नजर आती है तो हम उसका वहाँ पर भी विजिट कर लेते हैं। तो लेट्स गो। गर्मी तो बहुत टाइट हो रही है, ऑलमोस्ट 30 या 32 सेंटीग्रेड है और से पसीना निकल रहा है। आपको पता है कि यूरोप के अंदर ना हर कंट्री की एक अपनी जबान होती है। इटली के अंदर इटालियन बोली जाएगी, स्पेन के अंदर स्पेनिश, पुर्तगाल में पुर्तगीज, जर्मनी के अंदर जर्मन। अगर आप इससे पूछे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जर्मनी के अंदर पूछे किसी से, जब फॉर एग्जाम्पल जब हम नए आए थे तो जर्मन आती नहीं थी, तो जर्मन से पूछते थे कि कोई एड्रेस वगैरह पूछना है, पहले उससे पूछते थे कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो कहता है लिटिल बिट। फिर आप उससे कहते कि भाई एड्रेस बता दे, भाई वो जो इंग्लिश बोलता, यस फर्स्ट यू वुड लाइक टू हैव टू गो टू स्ट्रेट अहेड ऑन राइट साइड और सिंस 500 मीटर यू विल फाइंड एन अदर स्ट्रीट and there you will find an extreme finest Turkish cuisine. From there you have to take left, right, and on the 500 meter there you will find one more street, the name Wolfgangstrasse. There you will have to take right and straight ahead. Just you will be there. I wish you a nice and finest journey. हम यूं देख रहे होते थे भाई तेरे ये लिटिल बिट है, जर्मन की लिटिल बिट ये होता है। और अगर यहाँ इटाली के अंदर अगर पूछेंगे भाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, वो कहते हैं इटालियन कहते हैं लिटिल बिट। फिर से कहते हैं भाई तू ये एड्रेस बता दे, या हियर you here this and right 5 you here finish gracias गया। भाई ये तेरा लिटिल बिट था, इसमें लिटिल तो था ही नहीं, तेरा तो फिर बिट ही रह गया। इनका लिटिल बिट इतना होता है और जर्मन का लिटिल बिट, जब हम उनकी इंग्लिश सुनते थे जर्मन की, हम कहते कि भाई तू लिटिल बिट इंग्लिश रहने दे, मैं ही जर्मन सीख लेता हूँ। और यहाँ इटालियन की यकीन करें, इनका तो लिटिल बिट के अंदर लिटिल तो है ही नहीं, सिर्फ बिट ही है। खैर बहरहाल अभी चलते हैं स्ट्रीट्स के अंदर। हेलो हम्म हम्म थैंक यू। हाउ मच? Yeah, just downtown. Sorry, can I ask you what is the type of the webcam? Of this one? The name? Osmo. Osmo. Okay. Can I write? Osmo so many. This is, let me write. Thank you. Okay. Look up.
Ah, thank you. अच्छा It's a good camera. yes, you see, for example, uh, here Yeah. you can click here, here Ah, okay. is to you. Okay. Now you can click again, Ah, is to me. you. Okay. Yeah, and from this, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने एक छोटी सी शॉप थी वहाँ पर रुका और वहाँ पे मुझे आइसक्रीम और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी थी। तो मैं आइसक्रीम वगैरह ले रहा था तो उसके बाद फिर वो जो काउंटर पे लड़की थी तो वो मुझसे पूछ रही थी कि ये कौन सा कैमरा क्या है, क्योंकि मेरे पास ये DJI Osmo Pocket 3 है। स्मॉल नहीं छोटा सा स्लिम एंड स्मार्ट और बहुत ज़्यादा ईजी है, कन्वीनियंट टू यूज़ है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये कैसे यूज़ करते हैं और इसका फंक्शन क्या क्या है, तो मैं उसको बता रहा था। और लेकिन मैंने उसको बताने से पहले बताया कि मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी अगर तुम्हें बताऊँ। वो कह रही कोई मसला नहीं, तुम ऑन कर लो। उसको बॉस भी कह रहा था हाँ बना लो, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल उसको इस DJI Osmo Pocket 3 के बारे में बता रहा था कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर वो कहती थी मुझे ना इसका नाम लिख कर दे दो। फिर मैंने उसको नाम इसका पेपर पर लिख कर दिया और मे भी वो ऑर्डर करना चाह रही होगी या देखना चाह रही होगी। खैर बहरहाल अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो गर्मी की शिद्दत को सिर्फ आइसक्रीम से ही थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आई डोंट नो, मैंने ये आइसक्रीम ही उठाई है, लेट्स सी, कोकोनट फ्लेवर। लेकिन चम्मच अजीब सा ही है, ये कैसा चम्मच है? ओके, आई गॉट इट। ये चम्मच ऐसा क्यों है? उसकी रीजन ये है कि ये नॉर्मली यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर वो प्लास्टिक को ऐसा ऐसा ख़त्म कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है और बल्कि वो खुद भी इसी पर काम कर रहे हैं कि प्लास्टिक को ऐसा ऐसा अपने प्रोडक्ट के अंदर से ख़त्म कर रहे हैं। कि ये जो चम्मच आपको देख रहे हैं नज़र आ रहा है ये प्लास्टिक नहीं है, ये बेसिकली पेपर स्पून है और ऑफ कोर्स ये आइसक्रीम तो है ही पेपर कप के अंदर, तो शायद इस वजह से। और ये चम्मच का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंस है और पेपर है, सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई थिंक अच्छी बात है। लेकिन खाया नहीं जा रहा भाई इससे। आइसक्रीम मज़े की भी नहीं है, बस सही है। गर्मी लग रही तो ठंडी है, कोकोनट फ्लेवर है लेकिन तो खास वो फ्लेवर नहीं है। ये शायद हम लोग अपने फ्लेवर के आदी हो चुके हैं, थोड़ा सा अगर हमारे फ्लेवर के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते तो हमें शायद पसंद नहीं आता फर्स्ट टाइम। तो खैर बहरहाल जैसी भी है अच्छी। Hi guys, I'm here in Pisa Central Station and I met a very beautiful lady. Her name is Sharon. Sharon. And actually Sharon, she is from UK. Yes, And I where you am. live in UK? I live in Portsmouth. Ah, that's nice. And the Yes. one interesting thing is that she is also a YouTuber. Yes. So His Sharon, camera can you for say my something picture. about you? So I do travel vlogs and I also do just lifestyle and Bible content as well. I'm a Christian. So his camera actually caught my eye and I was like, I have to speak to you. That's great. Yes. So if you guys wanted to have the YouTube channel of Sharon, so please, I will write her YouTube channel name in the description, so you could also subscribe and watch her video because she Yes. definitely make a very good content and very beautiful as she is itself. Thank you. Thank you so much. Nice to meet you, Lovely Sharon. to meet you too. Nice to meet you too. See you then. See you later. Bye. कि मुझे मिली थी, इसका नाम शेरॉन था और वो भी यूट्यूबर थी, लंदन से आई थी। तो उसने मुझे देखा, कह रही है तुम्हारे हाथ में ये कौन सी प्रोडक्ट है? एक्चुअली DJI Osmo Pocket 3 है। तो मैंने उसको बताया, फिर वो कह रही थी इसके फीचर क्या है, मुझे बताओ, थोड़ा गाइड करो। मैंने उसको बताया, फिर वो कहती मैं भी एक्चुअली यूट्यूबर हूँ तो मैं इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। फिर वो कहती अच्छा मेरे साथ वीडियो बना लो और मैं बोलूँगी मेरे सब्सक्राइबर कि मुझे सब्सक्राइब करो तो लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे। मैंने कहा हाँ तू बोल दे, वैसे तो मेरे अपने सब्सक्राइबर नहीं है तो बहरहाल तू बोल दे।
तो खैर उसने खड़ा होकर मेरे साथ छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवाई